Okay, shall we begin? So I'll just revise geological time scale for you. We'll just revise geological time scale and then we'll move on. Fine. What we've done so far, we started understanding the various features, the various time period of the earth: hidden, archean, proterozoic, hidden no life, simplest life form, some specialized life form, phanerozoic, visible life form, पैलियोजोइक, मेसोजोइक, सेनोजोइक. तो एक एक करके समझते हैं. जियोलॉजिकल टाइम स्केल है क्या? क्रोनोलॉजिकल डेटिंग है ऑफ ऑल द लाइफ फॉर्म्स एंड द लैंड फॉर्म्स ऑन द अर्थ. इट डिस्क्राइब द रिलेशनशिप एंड द हिस्ट्री ऑफ द geological features that have taken place on the earth. What do you date? You start using the technologies like carbon dating. In the carbon there are isotopes of carbon 14 that has a very longer lifetime. तो आप कार्बन डेटिंग की मदद से, यूरेनियम लेड डेटिंग की मदद से आप पता कर सकते हो कि 4.5, 3.5, 2.5 बिलियन ईयर्स अगो है, बेस्ड ऑन दी कार्बन डेटिंग, बेस्ड ऑन दी आइसोटोप लेड डेटिंग. हमने ये नहीं लिखा है. द टेक्निक्स दैट आर इन्वॉल्व्ड इन जियोलॉजिकल टाइम स्केल आर व्हाट? द टेक्निक्स दैट आर इन्वॉल्व्ड इन जियोलॉजिकल टाइम स्केल्स आर कार्बन डेटिंग, यूरेनियम लेड डेटिंग. ओके, so carbon dating and uranium lead dating are involved in the study of the rocks. ठीक है. In the study of the rocks, in the study of the life forms, ये टेक्निक यूज हुई है, कार्बन डेटिंग और यूरेनियम लेड डेटिंग. कार्बन में भी आप कार्बन 14 जो आइसोटोप है उसको यूज करते हैं. ठीक है, इज इट फाइन? ठीक है. अभी इफ यू नो दैट व्हेन वाज द यूनिवर्स वाज फॉर्म अराउंड 14.5 बिलियन ईयर्स अगो. 13.5, 14.5 बिलियन ईयर्स अगो. सन कब बना है? 5 बिलियन ईयर्स अगो. और अर्थ का फॉर्मेशन कब से स्टार्ट हुआ है? 4.5 बिलियन ईयर्स अगो. तो हम कहां से स्टडी करते हैं अर्थ को? We start studying the earth from 4.6, 4.5 billion years ago, and the proper formation, it was a nebula. Okay, धीरे 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 नेबुला कूल और कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है. और प्रॉपर फॉर्मेशन जो आज आपको अर्थ दिखता है, उसका जो क्रस्ट बना है, the crust have formed around 3.5 billion years ago. So it has taken nearly 1 billion years ago from the nebula to condense, cool, contract. अभी भी नेबुला ठंडा हुआ नहीं है, अभी भी आपका अर्थ पूरी तरीके से ठंडा हुआ नहीं है. There is residual heat inside the earth's core. अभी भी your core is very very warm. Still the earth has not yet completely cooled down. So volcanism जो है, that is a means for cooling the interior of the earth. ठीक है, still the interior of the earth is very hot. So here this the proper formation began somewhere around 3.5 billion years ago. We've already seen this. There was nebula, there was cooling, contracting, condensation, gravitational pull that has formed your planet. That's how it has taken. There are various theories. For us it was the nebula hypothesis that was the most famous one. We've already covered that. Now this is the same nebula from which your earth has formed. Therefore, and not only the earth but the entire solar system was formed from the same nebular disk. We've already seen this. We've divided the geological time scale into eon, era, period, epoch. We've seen the important terms. Zoic means life form. Hadean means, Hades is the Greek god of underworld. You have Archean, very old. Proterozoic is simple, proto-initial. Phanerozoic means the initial, that is comes from the word visible, which is means visible, naked, visible to the naked eye. Paleo means old, Meso means middle, Seno means new. ये हमने terms लिख लिए. अब हम एक एक करके देखते हैं. You have Hadean, Archean, Proterozoic. Hadean around 4.5 to 3.5, no life. 3.5 to around 2.5 you have Archean, where the formation of life begins. Your formation of oceans, continents, Aravallis, Eastern Ghats, यहाँ पे आपका form हो रहा है. Proterozoic time पे you have the initial life that is coming. The initial life in the form of blue-green algae. So you have Hadean, Archean and Proterozoic. कि क्या है? Precambrian के time, Precambrian eon में you have these eras. The Precambrian eon has these eras. Hadean, Archean and Proterozoic. As we move on, you've seen that as you move on from Hadean, Archean, Proterozoic, you will have a Phanerozoic. Phanerozoic में you have Mesozoic, you have Paleozoic, Mesozoic and Cenozoic. In the Paleozoic you have cost cap, Cambrian, Ordovician, Silurian, Devonian, Carboniferous and Permian. Cambrian we did not study much. Ordovician it was fish.
then it was the fishes के बाद it was about your plants coming, plants के बाद amphibians coming, amphibian, then you have the age of the coal, and then you have the age of the reptile. So fishes से plants, plants से amphibian, amphibian, and then from the plants you have the coal, and then you have the age of the reptile. So this is how your coal is formed. It says that how is the coal formed. So you can look at here that there can be year long, there can be a lot of subsidence. The plants, when they went inside, after that they subsided. As they subsided, they submerged. सबमर्ज होने के बाद क्या हुआ, एनारोबिक डिकम्पोजिशन हुआ. एनारोबिक डिकम्पोजिशन होने के बाद आपका क्या बन जाएगा, कोल. तो कोल कहाँ बनता है, जहां पे डेंस वेजिटेशन हैज अंडरगॉन सबसिडेंस और सबमर्जेंस, एंड देन देयर हैव बीन एनारोबिक decomposition. This is how the life has evolved. This is how the life has evolved. You will see that this was what we've done already. इसमें कैसे लाइफ इवॉल्व हुई, पहले सिंगल सेल था, फिर यूनिसेल. There was this single cell. The single cell led to then unicellular organisms, blue, green algae, and the other. Then you have your fishes coming. We saw fishes. The age of the Silurian, Ordovician में आपकी fishes आती हैं, फिर Silurian में आपके plants आते हैं, और बाद में आपका रेप्टाइल का एज चालू हो जाता है पर्मिन में. उसके पहले डेवोनिन में एम्फीबियन आते हैं, फिर आपका रेप्टाइल होता है. तो फिशेस, प्लांट्स, you have the age of the amphibian, and then you have the age of the reptile. Fishes आते हैं, amphibians आते हैं, then reptiles आती हैं. तो fishes, amphibian and reptiles. इस fishes और amphibian के बीच में you have the plants also that are coming. तो life कैसे evolve हुई है, single cell organism से, unicellular organism से फिशेस बनी. फिशेस के बाद फिर आपके एम्फीबियंस आए, एम्फीबियंस के बाद आपके रेप्टाइल्स आए. ओशन से लैंड की तरफ, कैन यू सी, ओशंस इज फिशेस, देन यू हैव एम्फीबिया, लैंड एंड दी ओशंस, एंड देन यू हैव दी रेप्टाइल दैट इज देयर ऑन दी लैंड. तो पहले ओशंस में आ रहे हैं, फिर लैंड और ओशंस में दोनों दिख रहा है. एम्फीबियंस लैंड में भी रह सकते हैं, ओशंस में भी रह सकते हैं, एंड रेप्टाइल्स दैट आर मेजरली ऑन दी लैंड. सो फिशेस टू एम्फीबियंस टू रेप्टाइल्स. देन एज यू मूव ऑन, देन वी सॉ दैट. तो ये तो आपका हेडियन आर्कियन हो गया. फिर आपका फेनेरोजोइक में पैलियोजोइक भी हो गया, कॉस्ट कैप. फिर हम मेसोजोइक में आते हैं. मेसोजोइक में यू हैव क्रिटेशियस, जुरासिक एंड ट्रायसिक. जुरासिक इज द एज ऑफ डायनासोर. द एंटायर एज ऑफ डायनासोर इज योर जुरासिक, एंड देन क्रिटेशियस इज द एक्सटिंक्शन ऑफ द डायनासोर. क्रिटेशियस में आपका डायनासोर क्या होता है, आपके डायनासोर एक्सटिंक्ट हो जाते हैं. दिस इज व्हाट इज हैपनिंग. देन यू हैव कमिंग ऑन. तो हमने क्या देख लिया, वी सॉ पैलियोजोइक, वी सॉ मेसोजोइक. हमने प्री कैम्ब्रियन देखा, प्री कैम्ब्रियन के बाद फेनेरोजोइक में पैलियोजोइक देखा, Mesozoic देखा. We saw Paleozoic, we saw Mesozoic. Now we are moving to Cenozoic. In Cenozoic you have tertiary and you have quaternary. You have seen all this already. You have Mesozoic. You have then Cenozoic में tertiary and quaternary. In the tertiary you have the formation of Himalayas, Alps, Andes, Rockies. This is there. Then you have, and in the Pliocene you have the early human ancestors that are coming. This is Homo sapien, wherein we've come from chimpanzees. 97% of DNA is from chimpanzee. We behave like them. ठीक है. So we are Pliocene. Pliocene में there was early human ancestors. ठीक है. Then you have the Pleistocene and Holocene. Pleistocene में there was Homo sapien that have come. ठीक है. And then Holocene is the modern man. फिर से हम वापस जा रहे हैं चिंपांजी की तरफ ही. ठीक है. You want to destroy the we want to destroy the earth. एंड देयरफॉर इट इज लाइक कि अभी जो होलोसीन है उसको आप एंथ्रोपोसीन कर दो, बिकॉज ऑफ द हार्म दैट वी आर कॉजिंग टू द अर्थ. सो वी कॉज लॉट ऑफ हार्म एंड वी हैव बिकम द डोमिनेंट स्पीसीज. ठीक है. दिस इज व्हाट is the present time. So present day you have global warming, pollution, greenhouse gases, extinction of species, poaching, ठीक है, leather bags, ठीक है, and you have these, you have the Holocene and the Anthropocene, right? So ये क्या था? This is the debate. What we have done, we've seen eon, era, period, epoch and age. So what you have seen is eon, era, period, epoch. आपने eon, era, period और epoch तो आपने देख लिया. There is eon, era. You've already seen eon, era, period and epoch. ठीक है, आपने epoch तक देख लिया. अब जो present epoch है, Holocene epoch, it is said that the Holocene epoch should be further subdivided into age. And why this is important for us is because one age that we want to name, that is Meghalayan age. So in Meghalaya there have been certain rocks that have been seen in a cave. एक cave में कुछ rocks देखें. The name of the caves are Mamlu caves. Therein you have seen certain limestone rocks, and the limestone rocks provides us evidence
that after प्लीस्टोसीन, जब प्लीस्टोसीन के बाद वार्मिंग स्टार्ट हुई, तो वार्मिंग स्टार्ट होते होते वार्मिंग हुआ, then there was some cooling and then again some warming. So it was not that if after Pleistocene the earth has completely started warming. Even after Pleistocene there was some time period wherein this is your Pleistocene. Pleistocene mein you have Holocene. In the Holocene there are three divisions that can be done: Greenlandian, North Gripen and Meghalayan age. So I am dividing Holocene into three ages. I am dividing into the North Gripen age, the Greenlandian age and the Meghalayan age. When I talk about this was the cold time period till Pleistocene, it was cold, then it was warming that has started. Now Greenlandian age जो है वहां पे धीरे धीरे वार्मिंग स्टार्ट हुई. नॉर्थ ग्रिपिन में वापस से थोड़ा ठंडा हुआ. नॉर्थ ग्रिपिन there was again some bit of cooling, and Meghalayan age again there was some warming that has started. So it was some warming, again some cooling, again some warming. जब मेघालय में वार्म होना स्टार्ट हुआ, मतलब जब मेघालय के रॉक्स पड़ते हो, that after the Greenlandian age when it is warming again, the warming condition is not humid condition. The warming condition is accompanied by dry conditions. तो गर्म तो हो रहा है बट ड्राइनेस भी बढ़ रही है. बिकॉज ड्राइनेस बढ़ रही है तो वो ड्राइनेस के एविडेंसेस आपके रॉक्स में हैं. देयर आर एविडेंसेस व्हिच शोज दैट इन द रॉक्स दैट देयर वाज अ पीरियड ऑफ ड्राई एज, and it is said that many times it is correlated that the fall of civilizations, Indus Valley civilization, Mesopotamian civilization, has been probably because there was increasing dryness that was happening. We don't know why Indus Valley civilization, there is no clear conclusive evidence why Indus Valley civilization failed. One of the evidences, there was dryness in the world that was spreading throughout. That has not only led to fall of Indus Valley civilization but also of Mesopotamian civilization, Egyptian civilization and many other civilizations. So this was about the climate change that was happening in the Meghalayan age. There was droughts that was happening. The age is named after Meghalaya. In Meghalaya there is a cave called as Mamlu caves. They say that the limestone formation preserves the evidence of dryness. Okay, preserves the evidence of dryness. This is there, and this has led to collapse of civilization like Egypt, Greece, Syria, Palestine, Mesopotamia, Yangtze River. There have been collapse of these civilizations. It started somewhere around 4,200 years ago. So 2000 तो अभी हटा दो और 2200 पीछे वाला ले लो. So this was the time when Indus Valley civilization was around 2500 BC. You had Indus Valley civilization. So same time period it coincided with the increasing dryness. तो ये evidences store किए हुए हमने मेघालय में. Limestone rocks बताते हैं कि dry period आया था 4200 साल पहले. कुछ dry period आया था. There was a dry period and this has probably led to fall of civilization. It is named after our places Meghalaya and therefore it is important for us to know. ठीक है. What kind of questions have they asked in examination? इतना पढ़ा रहे हो, पहले तो ये बताओ इंपॉर्टेंस क्या है. एक तो इंपॉर्टेंस ये है कि आपको समझने के लिए ज्योग्राफी, ठीक है, कि ज्योग्राफी में आगे समझने के लिए दैट क्रेटेशियस टाइम क्या है, कार्बोनिफेरस पीरियड बोलोगे तो क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय व्हाट हैपेंड टू पैंजिया ड्यूरिंग क्रेटेशियस टाइम, व्हाई इज वेगनर यूजिंग दैट प्लेस, व्हाई डू वी. एक और इंपॉर्टेंस इतना है, देखो, इफ आई टॉक अबाउट दिस, इफ आई टॉक अबाउट योर जियोलॉजिकल टाइम स्केल, अर्थ वाज वेरी वेरी हॉट ड्यूरिंग हेडियन टाइम, then it cooled somewhat during Proterozoic time, then again it started warming during Carboniferous period time, then again it started cooling towards Permian time, again it started warming during Jurassic time, again it cooled in your Cretaceous time, again it started warming, again it started cooling. So if you look at the history of the earth has always gone through phases of cooling and warming, cooling and warming. earth के साथ ये हुआ ही है, cooling और warming हुआ ही है अर्थ के साथ. Therefore now what is happening? Pleistocene आया, Pleistocene के बाद what is happening? It is Holocene, that is warming. So are we responsible for this? Are we responsible for global warming? अर्थ तो शुरू से गर्म और ठंडा होता आया है, आप मुझे क्यों कह रहे हो कि मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ? तो क्लाइमेट चेंज क्या है? क्लाइमेट तो झूठी बात है. क्लाइमेट चेंज इज होक्स. एंड व्हाई शुड आई गिव यू मनी? Why should US give you money? US is not even responsible. Europe is not even responsible. Why should US and Europe give you money?
This is a means to extract money. Climate change is not real, it's a hoax. Climate change is, that's the reality of earth, that earth has gone through phases of cooling and warming. तो अब देख रहे हो जियोपॉलिटिकल डिबेट्स में कैसे ये यूज होता है कि अर्थ तो शुरू से गर्म और ठंडा हुआ है, प्लीस्टोसीन ठंडा था, होलोसीन गर्म है, अब मुझे क्यों कह रहे हो कि मैंने पोल्यूट किया है और मैं पैसे दूं, व्हाई शुड आई गिव यू मनी? दैट्स द डिबेट. बट there are scientist reports which says that, IPCC says that yes, climate change is reality for earth, but the rate at which we are warming, जिस हिसाब से, जिस रेट से हम वार्म हो रहे हैं, that is not natural. The rate at which the species are getting extinct, that is not normal. यहाँ पे दिखाते हैं कि human has actually done. It is said that by 2050 there would be more plastic in the oceans. अगर आप टोटल फिशेस का केजी वेट निकालेंगे और प्लास्टिक का केजी से वेट निकालेंगे, देयर विल बी मोर प्लास्टिक्स देन दी फिशेस इन दी ओशंस. सो दैट इज नॉट नॉर्मल. द रेट एट विच वी आर डिस्ट्रॉइंग, दैट इज नॉट नॉर्मल, एंड दैट इज व्हाई ह्यूमन, दैट इज नॉट नेचुरल एंड ह्यूमन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट. तो ये डिबेट्स में यूज होता है, ये आपकी ज्योग्राफी के कंसेप्ट समझने के लिए. द कंसेप्ट लाइक continental drift theory, formation of carbon, the evolution of life, the age of reptile, that is used. And because Meghalayan age is named after us, that is new. And once they have asked a question in UPSC, this was the question that they asked in examination in 2019. My last attempt, ये question पूछा था, ठीक है. The word Denisovan sometimes in media is in reference to. अब Denisovan ये news में था उस समय कि Denisovan sometimes in media is used in reference to. So fossil of a kind of dinosaur, okay, I don't know. A early human species, I don't know. A cave system found in northeast, we knew this, that the cave system that is found in northeast is Maumlu caves. That is not Denisovan, so this can be eliminated. A geological period in the history of subcontinent, no, we don't have. In the history of subcontinent, you don't have Denisovan. You have periods like, in the history of Indian subcontinent, you have periods like Archean, Purana, Aryan, Dravidian, Gondwana, ऐसे नाम है, हिंदी ही नाम है, गोंडवाना, द्रविडियन, आर्कियन, पुराना, आर्यन, ये नाम है. तो ये तो नहीं है, तो एटलीस्ट 2 was eliminated. It is not a species of dinosaur, it is not a fossil of dinosaur. डायनासोर के जो राइम होते हैं ना, वो होते हैं डायनासोर, मिसोसोर. These are the kind of species of reptiles. पढ़ोगे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में फॉसिल एविडेंस जब पढ़ोगे तो डायनासोर का भाई मिसोसोर, ठीक है, साइनोनाथिस होता है, ग्लोसिप्टेरिस होता है, ग्लोसिप्टेरिस इज अ फर्न. ये एनसीईआरटी में नहीं दिया है, बट यू विल स्टडी दैट. द आंसर हियर इज इट्स एन अर्ली ह्यूमन स्पीसीज. एक्चुअली टुवर्ड्स योर हिमालयन रीजन यति वाज फाउंड, यति मिला है, एंड उसके साथ ही ऐसे भी फॉसिल्स मिली थी डेनिसोवन मैन की. डेनिसोवन मैन, दैट इज योर अर्ली ह्यूमन स्पीसीज. सो दिस वाज देयर इन न्यूज देन. तो ये आप थोड़ा बहुत जियोलॉजिकल टाइम स्केल की मदद से आप एलिमिनेट कर सकते हो ऐसे ऑप्शंस को, ठीक है. सो मूविंग ऑन, राइट अबाउट द recent debate, write about the recent debate. It is recommended to further divide Holocene epoch. It is further recommended to divide Holocene epoch into age. ठीक है, एक नया डिविजन ही चाहिए हमको एज का. इयन, एरा, पीरियड, एपॉक एंड एज. होलोसीन एपॉक को फिर से आप डिवाइड करो एज में. द थ्री एजेस आर Greenlandian age. The 3 ages mentioned are Greenlandian age, comma, North Gripen age, and Meghalayan age, ग्रीनलैंडियन एज में बस एरो करके लिखो वार्मिंग फेज. इन द ग्रीनलैंडियन एज जस्ट राइट दी वार्मिंग फेज. इट वाज अ वार्म फेज.
In North Gripen age, just write abrupt cooling. Abrupt cooling. And Meghalayan age में write about Meghalayan age. We'll write in detail about Meghalayan age. Give the heading Meghalayan age. 4,000 years ago, 4,000 years ago to present day era. To present day era. In bracket close, right? It is synonymous with dry conditions and drought. Synonymous with dry conditions and drought. In bracket you can write climate change. Climate change. Meghalayan age is named after Mamlu caves. Mamlu caves. MAWMLUH. Mamlu caves. MAWMLUH. Mamlu caves in Meghalaya. Mamlu caves in Meghalaya that has limestone formation. Okay, you can write it is based on the study of rocks. It is based on study of the rocks. ठीक है, study of the rocks. See how do you know whether it was a warm phase, whether it was a dry phase? कैसे पता पड़ता होगा? How do you know? Vegetation, तो vegetation थोड़ी preserved रहती है. Vegetation is fine, very good. Vegetation is the visible index of climate, but how do you know? How do we know that, it was in the Permian time it was a cooling phase, in the Carboniferous time it was a warm phase? How do we know? Weathering of rocks. What will weathering of rocks do? आप आज खड़े हो, आप मुझे बता रहे हो 4 बिलियन साल पहले, 3 बिलियन साल पहले यहाँ पे ड्राई क्लाइमेट था. वाई शुड आई बिलीव यू? कल से क्या फूक के आए हो बताओ? 3 बिलियन साल पहले की बात कर रहे हो, बताओ. Yes, in the rocks there are fossils that are trapped. So it is fossils, the trapped fossils, that can tell you whether, if in case suppose there is a rock, there is a fossil. There is a fossil which has thorns. It does not have leaves. It has deep roots. You will see that there is dryness. You can see these adaptation. What kind of weather does it signify? I saw in the rock I saw a vegetation which had deep root, which had no leaves. It had just the thorns. There was a stem which was probably heavy. Okay. The leaf texture was waxy. What kind of weather does it signify? It tells us about the xerophytic vegetation. It is a desert vegetation. इतना लंबा रूट है क्योंकि पानी ढूंढने के लिए रूट था. वैक्सी लीव्स है ताकि वाटर लॉस को कम कर सके. ठीक है. थॉर्न्स हैं, लीव्स नहीं है, पक्का ड्राई क्लाइमेट रहा होगा. यही अगर आपको कोई फॉसिल मिला जिसमें ग्रीन लीव्स है, एकदम इंटायरली यू कैन सी द लीव इज ग्रीन. ठीक है. यू विल सी दैट द रूट्स आर नॉट वेरी डीप, दे आर शैलो. यू कैन सी अ गुड बार्क. आपको अच्छा बार्क दिख रहा है तो क्या होगा? इट विल बी प्रोबेबली ह्यूमिड क्लाइमेट. Not only do you study rocks, what do you study? यहाँ पे अगर आप डायग्राम देखोगे तो you will see a image of a person. Can you see? He is holding a ice core. Can you see? He is holding a ice core. एक ice का sheet है उनके पास, लिखा भी है ice core Greenland. So what happens is, if I want to know about the climate of, let's say, Prast, what do? I go to Antarctica. I take a slice of the huge big slice of the ice. And I try to look at, in the ice there are bubbles, okay, the air bubbles that are trapped. I study those air bubbles and I look at the composition of that air bubbles. If the air bubbles has more of CO2, it signifies what? It signifies
वार्म वेदर, बिकॉज ज्यादा CO2 है, ज्यादा CO2 एब्जॉर्ब कर दिया आपके आइस ने. if the air bubble has less of CO2, it signifies what? Cold weather. So your ice core, ice bubbles से भी आप पता कर सकते हो कि क्या क्लाइमेट था. अगर आप लेक्स पे जाते हो, लेक्स डीप होते हैं, लेक्स में भी लेयर्स होती है रॉक्स की. In the lakes, if in the lakes there are more of pollen grains, in the layer of the rock there are more of pollen grains, बहुत ज्यादा pollen grains हैं. It signifies what? It signifies humid climate, because of a humid climate रहेगा तो ज्यादा पेड़ होंगे, ज्यादा फूल होंगे, तो ज्यादा pollen grains होंगे. अगर pollen grains कम है, it will signify what? Dry climate. तो whether cold or warm, whether dry or humid, can be known from what? Can be known from the fossils, can be known from the air bubbles in the ice, can be known from the pollen grains that are trapped in your rocks. It can also be known, agar aap tree ko dekho, you see there are rings of the trees. If the tree, and each ring signifies a particular year, okay? If you study, if a tree is like this, suppose you are studying a tree and this is your tree, there are two examples that I can give you. So suppose this is a tree and it has rings, okay, and suppose this is another tree which has rings like this. It signifies something. It signifies if they are symmetrical. पहले तो each ring will tell you about the age. Greater the number of rings, greater is the age. Less the number of rings, less is the age. And if it is symmetrical, you know what does it say? It tells it is a warm and humid climate. Why? Because it has allowed the tree to be well developed. Tree was always standing and the rings have developed accordingly. Agar asymmetrical hai, if they are asymmetrical and they are irregular, they are asymmetrical, they are irregular, it signifies that there was a time period where the tree was bent. Tabhi they have become asymmetrical. Why did the tree bend? Probably because of the ice. There was a lot of weight of the ice, tree bent. So the tree bent because probably of some intervention by the nature. So this has happened. If we do not have well developed, if they are very close, it signifies dry period. बहुत क्लोज है तो ड्राई पीरियड रहा था. वेल डेवलप्ड ट्री नहीं. तो आपको एजेस के बारे में, क्लाइमेट के बारे में कैसे पढ़ता है? बाय स्टडिंग द ट्रीज, बाय स्टडिंग द rocks, by studying the pollen grains that are trapped in the lake, by studying the ice cores, उसमें जो बबल्स होते हैं उसकी कॉम्पोजिशन से पढ़ के तो आपको क्लाइमेट पता पड़ता है. तो यहाँ पे जो लाइमस्टोन रॉक्स थे मामलू केव्स के, दे सिग्निफाइड व्हाट? दे सिग्निफाइड ड्राई वेदर अप्रोक्सीमेटली व्हेन 4200 years ago. ठीक है, लिखो. द मेघालयन एज began 4200 years ago, and experienced an abrupt mega drought. बड़ा सा ड्राउट किया था. This severely impacted agricultural based society. This severely impacted agriculture based societies. Especially the civilization of इजिप्ट. कौन सी रिवर थी यहाँ पे? इजिप्ट, नाइल रिवर. ठीक है, नाइल इजिप्ट इज कंसिडर्ड टू बी द गिफ्ट ऑफ नाइल. इजिप्ट नाइल के कारण ही आया है, तो इजिप्शियन सिविलाइजेशन नाइल के पास थी. इजिप्ट. टॉक अबाउट ग्रीस सिविलाइजेशन. Trace to fall of Egypt civilization, Greece civilization, Syrian civilization. जॉर्डन रिवर के पास है सीरिया में. जॉर्डन रिवर इज देयर. नो, यू हैव पैलेस्टीन, बेसिकली मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन.
मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। मेसोपोटामिया कहाँ पे, विच कंट्री, इराक। विच आर द रिवर्स, टिग्रिस एंड यूफ्रेट्स। टिग्रिस एंड यूफ्रेट्स के पास यू हैव मेसोपोटामियन civilization. You have Indus Valley civilization in the northwestern part of the Indian subcontinent, and you have Yangtze River Valley civilization, China. Yangtze River, huh? नहीं, Yangtze River is the yellow river. Yangtze River, Xinjiang River, Yuanghe River, Yangtze River उधर है। वो जो आप कह रहे हो ब्रह्मपुत्र, वो है यारलुंग सांगपो। That's a different name. ब्रह्मपुत्र को यारलुंग सांगपो कहते हैं, वो यांगसे नहीं है, यांगसे रिवर वैली, ठीक है, चाइना में है यांगसे रिवर। तो यहाँ पे क्या हुआ कि इसके कारण ड्राइनेस आ गई, तो इट इज सेड दैट probably there have been fall of these civilization because of the dry conditions that were prevalent throughout, ठीक है। एविडेंस कहाँ प्रिजर्व्ड है, आपके मेघालयन रॉक में प्रिजर्व्ड। ऑल ऑफ यू क्लियर? कैन आई मूव ऑन? This was about your geological time scale. Moving on to what you consider as geography: rocks, mineral resources, etc. Okay. Yes. Anybody? बोलो. Okay. अभी कर क्या रहे हैं, हमें लैंडस्केप पढ़ना है. What we have to understand? Landscape. Landscape means we have to study mountains. You have to study plateaus, you have to study plains, ठीक है। What are these when I say a mountain or a plateau is tall, whereas a plain is flat, ये क्यों tall है? Why is the plateau tall? Why is the plain flat? What is landscape? Landscape is nothing but an aggregation of rocks. Rocks का aggregation होता है, igneous rocks हैं तो plateaus tall है, so aggregation of rocks. Rocks क्या होते हैं? What is a rock? Aggregation of mineral. What is a mineral? It is formed from the mixture of two. It is a compound. Mineral is a compound. Compound made up of two elements. It's a compound, no? SiO2 is a mineral. It is made up of an element. Element पता है क्या होता है? What is an element? आपने पढ़ा होगा शायद 12th में, 11th में, 8th में, 10th में। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, लीबे, बेकनॉफ, ने, सोडियम, मैग्नीशियम, नमक, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, क्लोरीन, आर्गन, ठीक है, ये सब है ना एलिमेंट्स होते हैं, ये पढ़ा है कभी? हाइड्रोजन, हीलियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, दीज आर एलिमेंट्स। व्हाट इज एन एलिमेंट? ये एलिमेंट्स है, ये एग्जाम्पल है एलिमेंट्स के। एलिमेंट्स कंबाइन करते हैं, व्हेन एलिमेंट्स कंबाइन दे गिव यू मिनरल्स, लाइक ऑक्सीजन एंड सिलिकॉन कंबाइनिंग गिविंग यू सिलिकेट्स. Silicate is a mineral. When minerals combine they give you rocks. When rocks they are in a particular aggregation you have the landscapes. ठीक है, तो ये आपका एलिमेंट है, एलिमेंट से मिनरल्स, मिनरल से रॉक्स, रॉक से दिस. If I study the earth, I can study the earth into, if I study the earth, this is my earth, okay. What are the elements in the earth's crust? What are the elements in the earth overall? What are the elements in the earth's core? What are the elements in the earth's mantle? अर्थ को 3 लेयर कर सकते हैं हम, क्रस्ट, मैंटल एंड कोर. क्रस्ट में कौन से एलिमेंट्स हैं, मैंटल में कौन से एलिमेंट्स हैं, कोर में कौन से एलिमेंट्स हैं, और अर्थ एज ओवरऑल कितने एलिमेंट्स हैं बताओ. हाँ, क्रस्ट में सिलिकॉन और एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम भी है सर, निकल एंड आयरन इन कोर. मेंटल में वो नहीं पढ़ा, सिलिकॉन एंड मैग्नीशियम. ये जो आप मुझे आइडिया बता रहे हो कि क्रस्ट इज सियाल, मेंटल इज सीमा और नाइफ, कोर इज नाइफ, ये बहुत पुरानी आइडिया और इसको रिजेक्ट कर दिया. इसीलिए रिजेक्ट किया था, जब स्टडी करी तो पता पड़ा क्रस्ट में क्या है,
क्रस्ट में यू हैव सिलिकॉन, yes you have silicon, you have silicon, you have oxygen, you have aluminium, you have iron, you have calcium. तो आप जो मुझे बोल रहे हो सियाल है, सिलिकॉन और एल्यूमिनियम है, तो बहुत कुछ है, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, ठीक है, यू हैव एल्यूमिनियम, यू हैव आयरन, यू हैव कैल्शियम. तो ये बहुत सिंपलिस्टिक डिपिक्शन आप दे रहे हो. मेंटल में भी वही सब कुछ है, मेंटल में भी ऑक्सीजन है, मेंटल में भी सिलिकॉन है, मेंटल में भी एल्यूमिनियम है, मेंटल में भी कैल्शियम है, मेंटल में भी मैग्नीशियम है. तो डिफरेंस क्या हुआ क्रस्ट और मेंटल में? अगर मेंटल में भी वही है और क्रस्ट में भी वही है तो डिफरेंस क्या हुआ? डिफरेंस इज विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर. ठीक है, टेम्परेचर डिफरेंस है. और क्या डिफरेंस है? द नेचर ऑफ सिलिका. सी, सिलिकॉन इज अ एलिमेंट, सिलिकॉन इज अ element. I'm just taking silicon. Silicon plus oxygen, that is your silicate becomes what? Minerals. They can become a base of what? Rocks. Earth में जो majority rocks हैं वो क्या है? Silicate rocks हैं. Majority of the rocks on the earth is silicates. अभी silicates के भी various types हैं. It's a group of silicates. है क्या? Silicate is a group of minerals. Silicate you can have various type of silicates. आपके you can have amphibole, you can have pyroxene, you can have biotite. तो सिलिकेट की प्रॉपर्टीज अलग अलग हो जाती हैं. पॉइंट यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि क्रस्ट में भी सिलिकेट है, मेंटल में भी सिलिकेट है, और कुछ सिलिकेट आउटर कोर में भी है, कुछ सिलिकेट आउटर कोर में भी, बट प्रॉपर्टी सिलिकेट्स की अलग अलग है. सिलिकेट्स बिहेव वेरी डिफरेंटली इन द क्रस्ट, सिलिकेट्स बिहेव वेरी डिफरेंटली इन दी मेंटल. ठीक है, तो हम थोड़ा बेसिक करते हैं, पहले एलिमेंट्स, रॉक्स, मिनरल्स पे जाते हैं. आपका चैप्टर 7 है ये, आपका चैप्टर 7 जो है क्लास 11th एनसीईआरटी का, वो चैप्टर 7 है जिससे रॉक्स, मिनरल्स और प्रॉपर्टीज आप पढ़ते हो. ठीक है, तो करो एक काम, लिखो दैट लैंडस्केप, लैंडस्केप्स इन ज्योग्राफी, लैंडस्केप्स इन ज्योग्राफी, लैंडस्केप्स इन ज्योग्राफी. Landscapes in geography. First, the landforms represent the rocks. The landforms represents the rocks. ठीक है, full stop. Rocks are made up of minerals. Rocks are made up of minerals. Minerals are made up of element. Minerals are made up of element. इसमें नेक्स्ट पॉइंट लिखे, the minerals that makes up the earth, the minerals that make up the earth are unlimited. Minerals that make up the earth are unlimited. बहुत सारे मिनरल्स आपको मिल सकते हैं. ठीक है, इतने सारे एलिमेंट्स हैं, ये एलिमेंट्स इतने सारे हैं. दीज आर द एलिमेंट्स, लिथियम, बेरिलियम, you have boron, you have carbon, you have nitrogen, oxygen, fluorine, neon. इतने सारे एलिमेंट्स हैं. ये एलिमेंट्स कैसे भी कंबाइन हो सकते हैं और आपके मिनरल्स बन सकते हैं. मिनरल्स, these elements make up minerals, right? These minerals they make up rock. The rock they finally make up the landscape. So there are so many elements. These elements can combine in various methods and they can give you the minerals. The number of ways in which the minerals can make up are, there can be any number of things. ठीक है, but majorly the dominating minerals are 6. डैश करके लिखे, सिलिकेट, ऑक्साइड, सल्फेट्स, सिलिकेट्स, ऑक्साइड्स, सल्फेट्स, सल्फाइड,
सल्फाइड, कार्बोनेट, हेलाइट, हेलाइट। ठीक है, इसमें लिखो सिलिकेट्स, सिलिकेट्स are the dominant rocks. Silicates are the dominant rocks. Silicates are the dominant rocks. ठीक है, it is silicate that actually dominate. सबसे ज्यादा कौन डोमिनेट करता है? सिलिकेट ही डोमिनेट करता है। आपको सिलिकेट यानी क्या होता है? व्हाट इज सिलिकेट? SiO2। सिलिकेट इज SiO2। SiO2 डोमिनेट करता है पूरे अर्थ पे। सिलिकेट्स कहां मिलता है? फ्रॉम द क्रस्ट टू दी मैंटल टू दी आउटर कोर। आपको पूरे आउटर कोर तक आपको सिलिकेट्स मिलता है। तो यहां पे लिख सकते हो सिलिकेट्स इज फाउंड, सिलिकेट इज फाउंड, सिलिकेट इज फाउंड, सिलिकेट इज फाउंड फ्रॉम द क्रस्ट, फ्रॉम द क्रस्ट टू द आउटर कोर, टू द आउटर कोर। ठीक है, तो आपको ये लग रहा था कि सियाल सीमा है, सिर्फ क्रस्ट में ही सिलिकॉन है, नहीं, मेंटल में भी सिलिकॉन है, कोर में भी सिलिकॉन है। यू थॉट नो सियाल इज फ्लोटिंग ओवर सीमा, तो सिलिकॉन एंड एल्यूमिनियम इज फ्लोटिंग ओवर सीमा? नो, सिलिकॉन इज फाउंड एज इंटीरियर एज द अर्थ्स कोर, आउटर कोर तक आपको सिलिकॉन मिलता है। ठीक है, तो क्या क्या एलिमेंट्स मिलते हैं क्रस्ट पे, क्या क्या एलिमेंट्स मिलते हैं आपके मेंटल में, क्या क्या एलिमेंट्स मिलते हैं आपके कोर पे? अभी अच्छा था, मैं आगे से यही पूछूंगी बच्चों से। पहले मुझे बताओ, अगर अर्थ समझना है तो पहले ये बताओ क्रस्ट क्या है, मेंटल क्या है? तो यही बोलेंगे सियाल और सीमा है, बट दैट इज नॉट द केस। इट इज नॉट जस्ट सियाल। सियाल यानी क्या? सिलिकॉन और एल्यूमिनियम, बट सिलिकॉन और एल्यूमिनियम नहीं है क्रस्ट में। सिर्फ क्रस्ट में यू हैव व्हाट? यू हैव ऑक्सीजन and silicon, silicates, you have aluminum also, you have iron also, you have calcium also. This is so right. The elements in the earth's crust are, the elements in the earth's crust are, it's combined, no, it combines with silicates, silicon to gives you SiO2, combines with the elements in the earth's crust are ऑक्सीजन, ऑक्सीजन 46%, अगर डेटा नहीं भी याद है तो चलेगा। ऑक्सीजन, कॉमा सिलिकॉन, कॉमा एल्यूमिनियम, कॉमा आयरन, कॉमा कैल्शियम, कॉमा कैल्शियम। ठीक है, एलिमेंट्स इन द अर्थ क्रस्ट आर दिस: ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, आयरन एंड कैल्शियम। ये अर्थ क्रस्ट हो गया। नाउ लुक एट द नाउ लुक एट दोस इन द मेंटल। व्हाट इज देयर इन द what is there in the mantle? Again, in the mantle also, here this is the mantle. In the mantle also you have what? You have oxygen and silicon. You have oxygen and silicon in the mantle also. You have aluminium, you have iron, you have calcium, you have sodium, you have potassium, magnesium and अदर्स। तो एलिमेंट्स आपकी मेंटल में भी वही है, सिलिकॉन है, ऑक्सीजन है, एल्यूमिनियम है, आयरन है, कैल्शियम है, और परसेंटेज भी देखो नियरली सेम है। दिस इज नियरली 46%, दैट इज 47%, दिस इज 28%, दैट इज 28%, दिस इज अबाउट योर एल्यूमिनियम 8%, एल्यूमिनियम इज 8%, आयरन इज 5%, आयरन इज 5%, कैल्शियम इज 4%, कैल्शियम इज 3%। तो नियरली परसेंटेज भी सेम है, कॉम्पोजिशन भी सेम है, एलिमेंट्स भी सेम है, बट मेंटल बहुत अलग तरीके से बिहेव करता है और सिलिका क्रस्ट बहुत अलग तरीके से बिहेव करता है। तो ये लिख लो। सिमिलरली mantle also has similar composition to that of Earth's crust, ठीक है, क्रस्ट समझ गया, मेंटल समझ गया। लिखो एलिमेंट्स इन दी अर्थ्स कोर,
elements in the Earth's core. Outer core has iron and nickel. Outer core has iron plus nickel and silicates. While elements is silicon plus oxygen, silicon and oxygen, silicates and silicon and oxygen. So outer core has iron plus nickel, silicon and oxygen. Inner core has what? Iron and nickel. The inner core has iron and nickel. All of you clear? So what does the outer core has? Iron plus nickel plus silicon plus oxygen. Inner core has iron and nickel. अब लिखो elements as in the earth's crust. Overall elements in the earth crust. Sorry, in the earth overall. Elements in the earth overall. Earth overall में क्या क्या elements हैं? सबसे ज्यादा है आयरन. The maximum one is iron, 35%. Oxygen, 30%. Silicon, 15%. And magnesium is 13%. Iron, oxygen, silicon and magnesium. ठीक है. तो देखो अगर आप अर्थ क्रस्ट को पढ़ोगे, when you study the earth crust, you will see that in the earth crust, I see very less iron. I can see only 5% iron. But if I study earth as an overhaul, I can see 35% as iron. If I study earth's crust, I can see, I'm studying the crust, the first layer. जब मैं पहली लेयर पढ़ रही हूँ तो मुझे सिर्फ 5% आयरन दिख रहा है. बट मैं अर्थ को ओवरऑल स्टडी कर रही हूँ तो मुझे 35% आयरन दिख रहा है. इसका क्या मतलब है? इट मीन्स दैट कोर हैज व्हाट? कोर हैज आयरन. इनर लेयर में क्या है? ज्यादा आयरन है. ठीक है. तो ये आपके एलिमेंट्स हैं. सो इट इज नॉट सिंपली अबाउट सियाल एंड सीमा एंड नाइफ. इट इज मच मोर कॉम्प्लेक्स इन रियलिटी. सो सियाल सीमा नहीं है सिर्फ. आपका जो अर्थ का क्रस्ट है इज नॉट सियाल. अर्थ का मैंटल इज नॉट जस्ट सीमा. इट्स नॉट knife is fine. The inner core is knife, but it is not as simplistic. Fine. So this was about the earth's crust, mantle and this. Now, okay. Write one statement. You've written what is rock, what is elements, what is minerals. क्या minerals मिलते हैं हमने ये भी लिखा. लिखो. Though silica is found from crust to outer core, though silica is formed from crust to outer core, silicate groups have variety in them. The silicate, full stop, the silicate group of crust is majorly feldspar and quartz. While feldspar, FELDSPAR, feldspar and quartz, QUARTZ. ठीक है. While the silicate of the mantle is majorly olivine. OLIVINE. ठीक है. तो आप आपकी एनसीईआरटी में पढ़ते हो कि मेंटल में ओलिविन है, तो आप सोचते हो ओलिविन क्या है? ओलिविन इज अ मिनरल. कौन सा मिनरल है? सिलिकेट ग्रुप ऑफ मिनरल है. सिलिकेट ग्रुप ऑफ मिनरल्स बहुत ज्यादा होते हैं. इफ यू हैव, इट्स क्वार्ट्ज, फेल्डस्पार, बायोटाइट, माइका,
ठीक है, यू हैव एम्फीबोल, पायरोक्सिन, मस्कोवाइट, नॉट माइका, मस्कोवाइट। ठीक है, तो आपकी सिलिका बहुत, सिलिका के अलग अलग टाइप हो सकते हैं। तो जो मैंटल में मिलता है वो है जनरली ओलिवीन, जो क्रस्ट पे मिलता है वो है क्वार्ट्ज और फेल्ड्स्पार। हम इतना ही रखेंगे। और इनकी क्योंकि अलग अलग ग्रुप्स होते हैं, अलग अलग टाइप होते हैं सिलिका की, तो इनकी प्रॉपर्टीज भी अलग अलग होती है। लाइक फेल्ड्स्पार इज हार्ड, feldspar is hard, olivine is jelly like, olivine is jelly like, feldspar is very hard, olivine is jelly like. So if I say crust has feldspar, crust is what? Hard. If I say mantle has olivine, mantle is like what? Mantle is jelly like. It is not solid, it is not liquid. What is it? It is jelly. You've eaten custard jelly, custard और jelly. तो custard जो jelly होती है वो क्या होता है? क्या वो solid है? No, it is not entirely. It is a plastic like. You can say it is plastic like. अब ओलिवीन भी ऐसा होता है, प्लास्टिक लाइक होता है। अगर आप जेली पे प्रेशर दोगे, ठीक है, प्लास्टिक पे प्रेशर दोगे तो वो क्या करता है? फ्लो करने लगता है। So similarly, when you put pressure on mantle, it starts flowing. It becomes liquid in nature. समझ आ रहा है? Then what you have? You have volcanism in the other part. So mantle overall is jelly like. But if you put pressure on mantle, because of olivine, it starts flowing. Because of property of olivine. Olivine is also jelly like. If you put pressure, it starts flowing. So that is the case with mantle also. It is jelly like, but if you put pressure, it will start flowing. ठीक है, तो ये आपके elements है और ये आपके rocks हैं। इसके बाद we'll study, इसके बाद not today, tomorrow probably we'll study the, now at least आपको थोड़ा बहुत idea हुआ है, you have some idea about it. Tomorrow we'll study about the layering of the earth. If it is not Sial Seema knife, if it is not Sial Seema knife, then what it is? ठीक है, तो what it is, we'll study that, the chemical property, crust, mantle and core, lithosphere, asthenosphere, mesosphere और barysphere. ये कल layering पढ़ेंगे, कल rocks पढ़ेंगे, the types of the rocks. Rocks देख लिया, type of rocks देखेंगे, rocks are of 3 types. You have, अब आपको पता है, you have, now you know, it is rocks are of 3 type, ये रट लिया है, rocks are of 3 type, igneous, metamorphic और सेडिमेंट्री। अंडरस्टैंडिंग तो डेवलप करो, रॉक्स होता क्या है, मिनरल क्या होता है, सिलिकेट क्यों बात कर रहा है, ओलिवीन क्या होता है, डेवलप दोज अंडरस्टैंडिंग एंड लिंकेजेस आल्सो। सो एलिमेंट्स है, एलिमेंट्स से मिनरल्स, मिनरल्स से रॉक्स, रॉक्स यू नो द टाइप्स ऑफ रॉक्स आर igneous, sedimentary and metamorphic. You know that igneous rocks are formed because of cooling and solidification of magma. Magma cools, solidifies, gives you igneous rocks. Igneous rocks has minerals. Igneous rocks is crystalline. ठीक है, अब crystalline क्या होता है? ये पता है कि igneous rocks are crystalline, but what is crystalline? It has a definite arrangement. It has a definite arrangement. ठीक है, तो we'll study the types of rocks tomorrow. We'll study the layering of the earth tomorrow, and if possible, we'll also go towards the interior of the earth. Evidences about the interior of the earth. कि क्या क्या आपके evidences हैं, and then we can start off with continental drift theory, plate tectonics, and other things. So we'll start off the class tomorrow. I'll tell them to repair this, ठीक है, because that is creating a lot of confusion. Thank you so much. Thank you for being so patient. Thank you.